हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं फार्मूला शीट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकेंड। इट इज डायमेंशनल फार्मूला mlt minus 1। एवरेज स्पीड, total distance travel upon total time taken. If the particle covered distance s1, s2, s3 and with the speed is v1, v2, v3. Average speed s1 plus s2 plus s3 upon s1 uh, upon v1 plus s2 upon v2 plus s3 v3. Velocity is equal to displace upon time. The unit of the velocity is also meter upon second. It is the vector nature. इसका जो नेचर होता है वो वेक्टर नेचर होता है। और डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी माइनस वन। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। Relative velocity of the object A with respect to object B. AB is equal to A minus B. When two objects are the moving in same direction के लिए तो BAB is equal to BA minus BB. When two objects are moving in opposite direction BAB is equal to BA plus BB. अब आइए इस पे, when two objects move at angle theta. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका BAB अंडर रूट में वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर बी माइनस 2AB कॉस थीटा। ये 10 और इसका ये थीटा से है तो एंगल से देखें तो 10 बीटा इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन BA माइनस BB कॉस थीटा। Acceleration, change in velocity upon time interval. It is SI unit is meter upon second square. It is a vector quantity. It is dimension formula is mlt minus 2. Average acceleration, if a particle is the acceleration for time t1 with the acceleration a1 and for the t2 with the acceleration a2. Average acceleration a1 t1 plus a2 t2 upon t1 and t2. Instantaneous speed, velocity and acceleration. Instantaneous speed limiting delta t से 0 and delta s upon delta t is equal to delta s upon delta t ds upon dt integration. Here ds is a small changes. स्मॉल चेंज के लिए ds यूज़ करते हैं डिस्टेंस एंड dt इज़ द स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए dt. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिटिंग डेल्टा t से 0 एंड dx अपॉन dt delta x upon delta t is equal to dx upon dt. ds is a small change in displacement. Instantaneous acceleration limiting delta t से 0 and delta v upon delta t dv upon dt. Time kinematic equation for uniformly accelerated motion. The relation between the initial and final velocity. इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, and is the acceleration and t is the time taken.
the acceleration between the displacement and the initial velocity. S is equal to ut plus half at square. S is the displacement of the body. कोई body है तो S displacement of the body and the relation between the final and initial velocity along with the displacement. तो v square is equal to u square plus 2as. Non-uniformly accelerated motion. For one-dimensional motion, v is equal to limiting delta t say 0, ds upon dt is equal to ds upon dt. The acceleration is the given as a is equal to limiting delta t up say 0 and delta v upon delta t is equal to dv upon dt. d is upon dt and ds upon dt. डी स्क्वायर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर.